Process costing, a topic specially designed for those who are involved in manufacturing processes. The product which comes after so many processes, that is raw material to finished goods conversion, takes some steps. The special topic for such kind of organizations, process costing. Obviously, first question comes, what exactly process is? We can say that process is a sub part of total manufacturing activity. For example, if in case of coconut manufacturing oil, the processes may be crushing, refining, double refining, packing, repacking. So ये हर एक छोटी छोटी जो step है, that is called as process. So we can say that process is a sub part of total manufacturing activity. What is process account and what is its use? Process account is a special account prepared for each process, and that is called as a mini trading account for that process. It debits all the expenses and credits the finished goods, normal loss and WIP. So इस account के debit side में units आएंगे, input units, and सारी cost आएगी like material, labor, overhead. While on the credit side normal loss आएगा, abnormal loss if any, which we are going to discuss in detail, and then WIP and how many units given to the next process. So process account is a mini trading account. क्यों बनाते हैं? To find out the cost of each process separately. For example, ये coconut oil manufacturing process takes 45 rupees per liter. मुझे किसी ने ऑफर दिया कि आप रिफाइनिंग डबल रिफाइनिंग बंद कर दो, we will give it to you at 18 rupees per liter. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रिफाइनिंग और डबल रिफाइनिंग में एक्चुअली कितना खर्चा होता है? To know the cost of each process, we need this mini trading account, process account. Next is what is inter-process profit. Generally, the goods are transferred at cost. मुझे भाई इतना खर्चा हुआ है पर लीटर 13 रुपीज, आप माल उठाओ, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो रॉ मटेरियल बन गया. बट समटाइम्स द कमीशन ऑफ द प्रोसेस मैनेजर डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस प्रॉफिट. तो प्रोसेस मैनेजर कहता है कि भाई ये अगर मैंने बाहर बेचा तो आई कैन सेल इट एट 19 रुपीज पर लीटर, सो नेक्स्ट प्रोसेस शुड परचेस इट एट 19 रुपीज पर लीटर. So that is what is inter-process profit. The profit added by giving department in the cost for the receiver department. So मेरे लिए profit हुआ, अगले process के लिए cost हो गया. In case of inter-process profit, format थोड़ा change हो जाता है. Instead of particulars units amount, you have to go for particulars total amount, that is invoice price, cost and profit element. So that is inter-process profit. Equivalent unit or equivalent product. What is that? This is simply the work in progress unit, that is WIP units converted into finished goods unit. As we know, stock तीन तरह का होता है, raw material, WIP, that is work in progress जो अभी incomplete goods है, third is finished goods. Raw material का valuation तो आसान है, finished goods is also very comfortable क्योंकि total cost है. WIP का valuation कैसे करेंगे? For example, WIP में भी 20% complete, 30% और 80% even. तो ये जो इनकम्प्लीट गुड्स है उसके वैल्यूएशन के लिए हम जो करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा मेरे पास 50 हाफ कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, तो आप कहोगे ओके 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 50% कंप्लीशन, सो 25 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं. इट मींस दिखने में वो 50 यूनिट्स है, लेकिन उन्होंने रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड उतना यूज किया है जितने में 25 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं. सो फॉर सिंपल एग्जांपल, 4 हाफ टिकट्स इज इक्वल टू 2 फुल टिकट्स. व्हाई? क्योंकि 4 हाफ टिकट्स को लगते हैं लेट्स से 10 रुपीज, 40 रुपीज, और 2 फुल टिकट्स को भी लगते हैं 40 रुपीज. दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट प्रोडक्ट. द WIP यूनिट्स कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटेड फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए एक स्पेशल स्टेटमेंट हम बनाते हैं कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट एंड फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. दैट इज इक्विवेलेंट यूनिट. What is FIFO, LIFO and simple average method? These three methods are used when there is a stock of WIP. जब मेरे पास incomplete units हैं तो मैं FIFO, LIFO या simple average that is SAM यूज करता हूँ. What is that? FIFO method assumes that कि आपके पास जो opening WIP था पहले आपने वो production के लिए लिया and then the new units. तो finished goods के valuation में दो parts करने पड़ते हैं, that is from opening WIP and from new. While in LIFO method it assumes that कि आपने नया वाला प्रोडक्ट पहले ले लिया, that is raw material taken first, जहां से finished goods बन गया, तो WIP में आपने ओपनिंग में से जो माल लिया था अभी भी पड़ा हुआ है. So that is LIFO. SAM, simple average method says life is simple, don't make any such assumption. ये भूल जाओ कि raw opening WIP कहाँ पे यूज हुआ था, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो. Finished goods को 100% stage of completion, WIP जितना होगा उतना. So simply ignore
in which stage, कहाँ पे opening WIP use हुआ है, that is simple average method. So that was FIFO, LIFO and SAM, especially used for the valuation of equivalent units, that is WIP units. Next comes which costs are to be added in the process cost. ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, process account is a trading account. Which cost to be added? All the directly connected costs relating to the process should be added. It will include material, labor, overhead, etc. अगर कुछ कॉमन अकाउंटेंट सैलरी है वो नहीं आएगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोसेस. एडिशनल मटेरियल है वो नहीं आएगा, बट बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है डेफिनेटली इट विल कम. सो टू कंक्लूड, ऑल द कॉस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस शुड बी एडेड एंड डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट. एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एनी लॉस विच इज अनएक्सपेक्टेड. कुछ प्रोसेस लॉस, नॉर्मल लॉस तो होता ही है, बट मोर देन दैट. My assumption is that 90% is my output ratio, means 10% माल तो खराब हो ही जाता है, so 10% is a normal loss. But actually जब मैंने 100 units का input दिया, I got 75 units only. So 25 lost, out of which 10 is normal loss, 15 is abnormal loss. It is credited in process account and debited to the costing P&L account. Any abnormal thing always goes to costing P&L account. What is normal loss then? It is expected loss. It is unavoidable loss. ये होने ही वाला है. So ये कहीं भी P&L डेबिट में नहीं जाता. Normal loss units are initially sold at scrap. जो भी पैसा मिल गया, and then it is absorbed by good units. इसका जो खर्चा है वो good units के सर पे डाल दो, इसका अकाउंटिंग नहीं होगा. While abnormal loss का अकाउंटिंग होगा, costing P&L डेबिट. Abnormal loss that we have already seen. Abnormal gain. Sometimes expectation से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है. For example, I was using the old machine and 100 to 80 was my input output ratio, so I was expecting 80 units मिलेंगे. But अचानक नया मशीन होने की वजह से 87 units मिल गए. So 7 units are more than my expectation. That is called as abnormal gain. Abnormal gain comes to the debit side of process account क्योंकि ज्यादा units बन गए credit side में. It goes to abnormal gain account. Abnormal gain में से उस प्रोसेस का abnormal loss adjust होता है. उसके बाद जो भी net gain हुआ, costing P&L credit. I repeat, from abnormal gain adjust the normal loss and the remaining amount goes to costing P&L credit side. So this was all about the theoretical concepts of the topic process account. So here we have gone through all the concepts of process which are to be applied in your practical things.